India, as we know, is among the top countries that embraces technology, and it was also one of the first countries that has introduced 5G, and the scale at which it has introduced throughout the country is unprecedented and is discussed throughout the world. But and similarly, we have also introduced EV technology, EV, and other similar technologies. But along with the technology, we also have to understand that it is equally important to safeguard it, because with technology comes responsibilities and new changes that people find hard, especially the common people who are not as up to date with technology as, let's say, us. So there is a lot to discuss on this topic, and let's say what we all have to say in this. Digital India is a great initiative as it gives boost to the Indian economy. Efficient currency management is also easier for the banks, and also UPI is being adopted worldwide. And also during G20, many street and local vendors also had UPI, which made it very popular in the worldwide. And Yeah, I agree digital. with you. Yeah, so digital India is helping common people. As in banking, we see there's a digital banking. Many we don't have to go to physically to bank. Now we can do anything on the apps that are available of different banks. Yes, but there are some scams which are happening because of this security breach. So we have to look into that also. Yes, I I want think that to. the infrastructure available in the country is not efficient enough, and the people are facing a lot of problems while doing digital transactions. There are no laws made in the country are not so efficient enough, so that, and moreover, the redressal system in the country is not up to the mark, so that the people can be able to get their money back if there is any fraud. Yes, I Yes, want There to should add be something to some. Rohit. That most of the people in our country are not aware that there is some data security which to be followed, and we say if they are aware, they are not completely know what step they have to take, so that they will not be vulnerable to the hackers. And sometimes we see educated people are also, they also mm, in the hand of hackers, and they go to the police, but the police can do anything because there are certain international links which are associated with the hackers. yes, yes. So data breach and the potential of getting scam is not just limited to people who have limited knowledge of technology. Nowadays, because of artificial intelligence and similar technology, people who are educated are also succumbed to such scams. So one thing is apparent for sure that data breach is one of the things that needs looking into. For example, as mentioned, the recent record breach of all the people who have done screen testing during the COVID, which is, I think, almost the majority population of India. So recently, all the data were leaked in the dark web, which includes our phone number, address, PAN card, Aadhaar card, etc. I mean, almost all the information has been sold, but and even at a very cheap rate. I think almost about 80,000 US dollars. So if such a data gets into the hands of wrong people, which I think is who has already reached there, so they can do more targeted attacks on people. So that is a very huge risk that we have to look into. मुझे लगता है Yes, कि I जो but think for, डिजिटल we have to. डिजिटल इंडिया but है डिजिटल मुझे लगता है कि जो but for डिजिटल frauds इंडिया है NPC but for Mhm. frauds NPCI is running an awareness campaign in which they have elected many celebrities for spreading the awareness through advertisements. But I think मुझे so that लगता है कि जो advertisement is not डिजिटल the इंडिया जो good. है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपना है कैशलेस इकोनॉमी का उसको भी पूरा करता है, क्योंकि जो कैशलेस इकोनॉमी होती है उस टाइम जो मनी होती है वो ट्रेसेबल होती है, तो इससे ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होगी। और दूसरी बात है कि जो डिजिटल इंडिया जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है, क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं वो अच्छे से अभी तक बैंकों में पहुंच नहीं पाते, तो वो जो उनको जो मुख्य धारा में लेके आते हैं, तो ये एक इसका पॉजिटिव है। और इससे
और इससे जो आरबीआई, और अगर कैथलिक इकोनॉमी भी होती है, तो आरबीआई की जो आरबीआई गवर्नमेंट जो करेंसी करेंसी नोट नोट छापते हैं, उनकी जो पैसा होता है वो कम लगेगा, तो उसका जो, तो वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों के काम ही आएगा। और मैकेंसी की रिपोर्ट है, उसके अंदर ये बताया कि अगर इंडिया डिजिटल इंडिया बनता है, तो 2026 तक जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.5% रहने के अनुमान है, और 2030 में जब पीक पे होगी तब 8.4% रहने की संभावना है। और दूसरी चीज है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो $5 ट्रिलियन का सपना है, टारगेट है, वो भी इससे आसानी से पूरा हो जाएगा। इसमें अगर कोई और कोई ऐड करना चाहे तो। I agree अब with you almost. भरत की बात से मैं एग्री करता हूँ। जैसा उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपना है, और कहीं ना कहीं जैसे हम देख भी रहे हैं कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स भी आजकल पेपरलेस होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ई विधान एप्लीकेशन को काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जैसे बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है अपना। और हमारा यूपीआई तो पूरी विश्व में काफी पॉपुलर हो चुका है। इसी के साथ साथ कुछ रिस्क तो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, और डाटा ब्रीच का risk, जैसे ऋतिक ने बताया था। तो हमको एक अच्छा एक रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आगे चल के और बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को अगर सस्टेन करना है, तो एक अच्छा रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए जो इन रिस्क को अवॉइड करे और इनको अच्छे से ट्रीट कर सके। और एक And बात in और है, certain जब से ये डिजिटल इंडिया आया है तब से बैंकों का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। अब हमने देखा कि एसबीआई ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट किया है। और अगर अभी जो दो दो जो अभी जो फर्स्ट में 30,000 करोड़ का, इस साल भी 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कर चुका है। तो ये सब डिजिटल इंडिया के कारण ही हो रहा है। कोई And और for ऐड? I uh, and agree for with you public all, but and for I want public to say awareness and for public awareness, we need make a mass awareness project like we have done for polio, like something like Yeah. that. Uh, Yes, Kunal, you are absolutely right about it. But what I want to put light on is, instead of awareness, we should be able to not let it happen at all. For example, one thing that has been seen in data breach is that the data breach does not happen on the higher level, but on the very ground level. For example, when we buy SIM cards, we always give all the information to the local shops. What these shops do is that they sell these people's information at a very cheap price to the local. Someone comes and they bribe him or something similar like that, and they just give away the information at a very cheap cost. Similarly, the issue with the data leak recently in the medical sector or similar place, what happened was all the leaks happened in a similar way. So in order to take care of in order to prevent data leak, we really don't have to look at a larger scale or some firewall improvement or anything like that. I think all we have to do is do a proper means take these companies responsible, hold these companies responsible, and make sure that these companies log these information away, and even make it a bit difficult for employees to get access to them. yes, I agree with. And for Aadhaar, government are also done with. We have option for mask Aadhaar, then where your Aadhaar number is not visible to anyone else when you are sharing your data. Or you can also turn off your fingerprint authentication by logging into Aadhaar app. but there are certain problems also, like whenever we buy a currency, is my voice audible? Yes, yes. Yeah. But there are certain problems also, like when I bought RB currency, the notes was issued to me and I got a serial number. But after I transferred in my account, the note, the serial number got the note was then retained, and it added to the financial inclusion. But I think so that it will be contributing to the inflation also, because the money supply is increasing with that. With the notes that they were there was a limit on the money supply in the economy. Yeah, sure. Uh, I think Sakshi, there is a I'm very, so I think there is a very important point that we are leaving behind. No doubt, digitization has provided us very efficient tools, but the one thing which is very important is direct benefit transfer in the government sector, where the benefit has to be transferred to people at BPL, below poverty lines, where corruption was very high in the past times when digitization was not very much available in India. That's the point I want to add. It's very important. कुलजीत ने काफी अच्छा पॉइंट रखा है कि एक ट्रांसपेरेंसी हम शोकेस करते हैं कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में। आरबीआई का एक सीबीडीसी का मूव था
वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि हम जो भी मनी सप्लाई रहे कहीं ना कहीं हम उसके कंट्रोल में, आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में रहें, और हमारा जो ब्लैक मनी है वो उतना ना जाए, टैक्स एवेशन को हम रोक सकें। तो डिजिटलाइजेशन के ये सारे फायदे तो हम देख ही सकते हैं। इसी के साथ साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे तो जॉब्स क्रिएशन भी बढ़ेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर भी हमारा बूम करेगा, और इवन हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अब तो डिजिटलाइजेशन की नीड हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो इकोनॉमी को भी एक अच्छा फायदा मिलेगा इससे। और इससे एक चीज और है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन भी आसानी से पा सकेंगे, जैसे हम भी अभी जो बात कर रहे हैं वो। Yes, Bharat, very good point. Yes, sir. हम्म। चलिए, anyone would National like to security add is at anything? risk. That is also a negative. Data breach and cyber threats. National Yeah. security is always at risk, and for that, government should make some frameworks where this thing can be handled pretty wisely. आई थिंक आरबीआई ने जो कार्ड टोकनाइजेशन किया है वो भी इस चीज को रोकने के लिए काफी एक अच्छा कदम है आरबीआई के द्वारा, और हम आगे भी फ्यूचर में ऐसे और कदम देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। Yes, Rohit. ऑल्सो पेमेंट बैंक्स भी इसीलिए खुले थे कि आपको सिर्फ एक लिंक के थ्रू आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ही ये बढ़ावा देता है। और इसकी वो और like e-rupee coupons are also issued that are only redeemable only in That that is place also at in the our right direction. और पीएम किसान जो स्कीम है इसके अंदर किसान को हर साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 मतलब साल में 3 बार। Installment. तो वो भी डिजिटल इंक्लूजन की, डिजिटल ट्रांजेक्शन के फायदा से होते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव है इसका। Yes, और Bharat, that is also direct benefit transfer, you know. Yes, government has come with certain card like one nation one card, like upper ID for students. For doctor, there is a they said the one card will be for all doctors. So government should use this type of scheme in a very good manner so that hackers can't hack this type of cards. So otherwise, there will be a very bad situation in the country. Yes, Papan. Sakshi, you want to add something? Suhasini, anyone? इसमें जो सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जो पैसे है वो कहीं कट जाते हैं, लोग मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी यार वन नहीं तो कोशिश कर भारत, कोशिश कर। ट्रांजैक्शन सही से नहीं होता। हाँ तो यार जैसे कि एक जगह जब बैंक से पैसे कटते हैं तो सीधे ही वो दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचते, बीच कुछ ट्रांजेक्शन टाइम होता है। इसलिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन दी थी 1062 ऐसा कुछ हेल्पलाइन थी, उसमें ये बताया था कि अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर सीधे ही उस हेल्पलाइन पे कॉल करते हो तो वो जो ट्रांजेक्शन है बीच में रुक जाएगा। तो इससे इसको जो डिजिटल इंडिया मतलब इसको सिक्योरिटी कंसर्न है इसको भी कम किया जा सकता है। तो ये अच्छा पड़ा। बिल्कुल। आरबीआई ने ओम्बुड्समैन स्कीम भी जो लॉन्च की, वो भी अब डिजिटल वे में आप जो भी आपको प्रॉब्लम कंप्लेन करना है वो आप कर सकते हो डिजिटल। So anyone would like to add anything? इससे बैंक को भी फायदा है, लेस मैन पावर लगेगा बैंक में, अगर डिजिटल की तरफ जाएगा तो उससे बैंक को भी फायदा होगा। But then again, there is I think so that Please, Jatin. I think so that the initial cost of providing the digital services to the customer is very high. Like I quote my personal example, my mother was doing a transaction online, but she was not knowing that how to increase the limit. The limit in somewhere the knowledge is lagging. The people are not getting the enough knowledge that how to increase the limit, because the daily limit in UPI is set to be 20,000, and the people do not know how to increase the limit. And we were calling helpline number was also not picked up. Okay. That is why I think Okay, GD is over.